good afternoon class 8. How are you all? Hope you all will be doing good in your home. Student, we have completed chapter number 11 force and pressure. ठीक है, वो दोनों चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ फ्रॉम चैप्टर 11 वी आर गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग फिजिक्स. ये फिजिक्स पोर्शन स्टार्ट हो रहा है हमारा. नाउ चैप्टर 12 इज फ्रिक्शन. दिस फ्रिक्शन इज रिलेटेड टू फोर्स. ओके, pressure, force and friction, these all the three terms were related to each other. Okay, so let's start chapter number 12 friction, page number 170. Okay students, so force of friction, in the previous chapter we have learned about force of friction. जैसे कि क्या था एग्जाम्पल, क्या पढ़े थे हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का? when a ball rolling on a ground, ठीक है, and finally gradually it's slow down this process and come to rest position. ये क्यों हो रहा है? the force of friction created between the surface of the ground and the ball. okay, जो सरफेस है ग्राउंड का और बॉल का सरफेस है, दोनों एक दूसरे, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से बॉल की जो स्पीड है वो कम हो गई. एट लास्ट बॉल कम्स टू अ रेस्ट पोजिशन. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वुड लाइक टू शो वन वीडियो रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन and the types of friction. First of all, go through the video, then we will start the class. Okay, enjoy the video. Frictional force. If a force is necessary to move an object, another force is required to stop it. This stopping force can be exerted by a person or an obstacle. However, the moving object comes to rest even in the absence of these forces. When we hold a pen in vertical direction as shown, the gravitational pull acts on the pen in downward direction. But as the pen is stationary, we can say that the total force acting on the pen is zero. This gravitational force acting on a pen is overcome by the force exerted by our fingers. Similarly, when we slide a book on a tabletop, it stops after moving a certain distance. Here, the tabletop exerts force on the book, which is responsible to slow it down and then stop the relative motion between the tabletop and the book. Friction plays a very important role in our daily life. We are able to write, walk, apply brakes to slow down the vehicle, tie knots, fix nails and screws, make woven clothes because of friction. Force of friction not only tends to stop a moving object, it also tends to stop a stationary object from moving. That is why it is difficult to move the heavy box. Properties of frictional force. It is produced only when one body tends to move or is actually moving on another body. It always opposes relative motion between the surfaces of contact. Example of contact force, irrespective of the direction of the motion. Types of friction. To move a stationary object, you have to apply force. As you apply continuously increasing force to the stationary object, the force of friction also increases. The force of friction between two or more solid objects which are not moving relative to each other is called static friction. As you apply more force, there comes a point when the object starts moving. At this point, the static friction is the maximum. Once the box begins to move, it is easier to slide it. This is because now, relative to the floor, the box is moving and the irregularities of the box and the floor do not get enough time to lock into each other. The friction produced between a surface and an object sliding over it is called sliding friction. Moving a box kept on a stand with wheels is much easier as the wheels roll over the surface of the floor. The friction produced between the rolling object and the surface is called rolling friction.
It is easy to observe that the force required to start the motion of an object is more than the force required to continue to keep it in motion. It is thus justified to say that sliding friction is less than static friction. Also, rolling an object is easier than sliding it. Hence, rolling friction is less than sliding friction. We can simply express it as static friction greater than sliding friction greater than rolling friction. Now you understand why it is convenient to pull a heavy travel bag fitted with rollers than sliding it. The principle of rolling friction is used in machines by using ball bearings. Ball bearings are small metallic balls which roll between two moving surfaces and reduce friction between them. Friction. To understand friction, let us consider the following example. Place the ball on the floor and push the ball to set it rolling. You will observe that the ball slows down after covering some distance and finally stops rolling and comes to a stop. Is there any force that acts on the ball and stops it? What is this force called? This force is known as friction and is always directed opposite to the direction of motion. Friction acts between two surfaces on contact, which can be solid, liquid, or gas. Friction can have many effects. Wear and tear. Compare the soles of a new pair of shoes with the ones that you have been wearing for some time. What causes the soles to wear out? The force of friction between the ground and the soles of your shoes wears out the soles. For example, parts of machines, tires of vehicles, etc. get worn due to the force of friction. Produces heat. When you rub your palms together, heat is produced. This is because friction produces heat. Advantages and disadvantages of friction. What would happen if So how is the video, students? So in the video you have learned about friction, the force of friction and the types of friction, static friction, limiting friction, kinetic friction. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने तुम लोगों ने वीडियो में देखा in detail. So let's discuss the friction chapter. Okay? And here another question as example is given that when you pedaling a bicycle, it's gradually start at a faster speed. ठीक है, जैसे जैसे पैडल को तुम लोग फोर्स देना बंद करोगे तो इट विल ग्रेजुअली द बाइसाइकिल विल बी कम एट द रेस्ट पोजीशन. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, द व्हील्स ऑफ द बाइसाइकिल एंड द सरफेस ऑफ द ग्राउंड अपोज कर रहे हैं एक दूसरे के मोशन को. ठीक है, सो द बाइसाइकिल्स कम्स एट द स्टॉप पोजीशन. सो दिस इज सेड टू बी एज फ्रिक्शन. द फोर्स gradually stop the motion of the objects over the ground, over the surface. This is said to be as friction. So friction can be defined as the force acting along the two surface in contact which opposes the motion of one object over the other is called the force of friction. ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो सरफेस है उनके बीच में फोर्स अप्लाइड हो रहा है और एक के वजह से दूसरे का जो मोशन है, द ऑब्जेक्ट विच वॉज इन मोशन पोजिशन, जो चल रहा है वो दूसरे के वजह से रुक जाता है. then this said to be as force of friction. The force is said to be at between the two objects, surface of the two objects is said to be as the force of friction. Okay, now the causes of friction. So here are different types of causes of friction are, first of all, the smooth and the rough surface. These two are the main cause of friction. कैसे? when you try to move one sandpaper over the other movement is not smooth. देखोगे sandpaper का जो movement होगा smooth नहीं होगा. ठीक है, so every solid object has a rough surface, as we all know that the degree of roughness varies from the surface to surface. ये भी clear है. ठीक है, जो roughness है वो अलग अलग object का surface का depend करता है, different objects का. So some surface are more rough that can be easily felt like sandpaper and some are so small which cannot be easily felt. वो हम लोग easily नहीं देख सकते. We can see this roughness through the help of microscope. So the roughness of the surface can be seen through a microscope in a form of tiny hills and valleys. वो कैसे होती है roughness?
हील्स और वैलीज जिगजैग मोशन में उसमें जो रफनेस है वो प्रेजेंट होता है. सो अब कैसे करेंगे, एक वुडन ब्लॉक को एक वुडन टेबल के ऊपर रब करेंगे, ठीक है. सो दिस टाइनी हील्स एंड वैलीज प्रेजेंट ऑन द बोथ द सरफेस, दे कम इन द कॉन्टैक्ट, गॉट इंटैंगल्ड, वो एक दूसरे से इंटैंगल्ड होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे. द इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सरफेस अपोजेस द मोशन ऑफ द वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर एंड गिव्स राइज टू द फ्रिक्शनल फोर्स. अब क्या हो रहा है, दोनों जब एक दूसरे के ऊपर टकरा रहे हैं, इफ़ यू रब द वन सरफेस टू द अनदर, अब उन दोनों के बीच में जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है ओवर द अनदर, दिस इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स. इज राइज गिव राइज, वहाँ पे वो क्या मिल रहा है, वहाँ पे बढ़ावा मिल रहा है किसको, फ्रिक्शनल फोर्स को. फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है दोनों के बीच में. एक रफ सरफेस है, अनदर रफ सरफेस, दे एंगल्ड विथ ईच अदर, ठीक है, दोनों टकरा रहे हैं, तो इट गिव्स राइज टू द फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, फिगर 12.2 इज गिवन, फ्रिक्शन इज ड्यू टू द रफनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. जो चीज़ मैंने अभी तुम लोगों को समझाया, सेम चीज़ वही दी हुई है. सी द हील्स एंड वैली ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, व्हेन दे कम इन द कॉन्टैक्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल क्रिएट. ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है. इन द फिगर यू कैन सी 12.2 द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो now page 10 students, page number 171. Okay, now here is a given spring balance. So spring balance is a device which is used to measure the force of friction acting between the two objects. So how the spring balance works on the principle of stretching of spring when force is applied. जैसे ही तुम लोग force applied करोगे spring में, तो उसको stretch करोगे. So due to the force, the spring will stretch. Okay, so this stretching spring is used to measure the force applied on the object. Clear हो गया? Now here types of friction is given. Let's start this one, types of friction. So the force of friction can be divided into three types: static friction, limiting friction and kinetic friction. One by one we are going to discuss this frictions. In the video, this static friction, limiting and kinetic friction are explained very clearly. If you have listened the video nicely, then you are able to understand what are these three frictions. So first of all, static friction, the opposing force that comes into play when one object tends to move over the surface of another but the actual motion has not started is called static friction. अभी किस टाइप का फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन कब स्टार्ट होता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, रहता है, मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर. एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करता है, ओनली द वन ऑब्जेक्ट विल मूव ओवर द अनदर, बट द एक्चुअल मोशन इज, जो एक्चुअल मोशन है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, वो स्टार्ट नहीं होता है. दैट इज मतलब वन ऑब्जेक्ट इज इन स्टैटिक पोजीशन, वो रुका हुआ है, सेकेंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग. जब तक फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, सेकेंड ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, तब तक फोर्स क्रिएट नहीं होगा जब तक दोनों ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेंगे. सो दिस टाइप ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज सेड टू बी एज स्टैटिक friction. It is prevent the motion and does not allow to the object to slide upon the another. अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट वन क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो उसका मूवमेंट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मूवमेंट दिखाई नहीं देता. ओके, नाउ द लिमिटिंग फ्रिक्शन. Limiting friction is the maximum opposing force that comes into play when one object is just at the verge of moving over the surface of another. इसमें क्या दिया हुआ है, if you move a heavy box on one place to another, the force required to overcome friction at the instant the box start moving from the rest. It is measure of limiting friction. अब इसमें क्या कर रहा है, जैसे ही तुम एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉक्स को मूव कर रहे हो, when it is from rest position, it measure the limiting friction. वहाँ से उसका limiting friction दिखाई देता है. The static friction at this stage is maximum. और जो static stage, the static friction है वो maximum level पे है. This maximum value of static friction is called as limiting friction. ठीक है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन है, दिस इज सेड टू बी एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. अब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा है, वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग हो गया, एंड दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन इज सेड टू बी, दिस स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम फ्रिक्शन में पहुँच गया स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज सेड टू बी एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले. यहाँ पे लिखा हुआ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, एक मैक्सिमम फोर्स है जब वो स्टार्ट होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज जस्ट वर्ज मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट. जैसे ही एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इज रिलेटेड टू द स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या हो रहा था, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था, एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ था और एक ऑब्जेक्ट मूव करने के टेंड में था.
अब लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे आएगा, जब ऑब्जेक्ट स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या, जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा और एक मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड होगा, एक मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट होगा, दिस मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज सेड टू बी एज लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ थर्ड वन इज द काइनेटिक फ्रिक्शन. थर्ड वन इज द काइनेटिक फ्रिक्शन. व्हेन वी इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स स्लाइटली बियॉन्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, अब अप्लाइड फोर्स है लिमिटिंग, अब उसका फोर्स को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं. सी दैट द बॉक्स बिगेन टू स्लाइड स्लोली. अब क्या देखने लगेंगे हम लोग, जैसे हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज करेंगे, फोर्स को, द बॉक्स विल बी स्लाइड स्लोली, वो जल्दी जल्दी स्लोली स्लाइड होने लगेगा. दिस डज नॉट मीन द फ्रिक्शन हैज डिसअपियर्ड, इट ओनली मीन्स दैट अप्लाइड फोर्स इज नाउ ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. अब इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे फ्रिक्शन जो अपोज कर रहा था दूसरा सरफेस वो खत्म हो जाएगा, नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि जो अप्लाइड फोर्स है इट्स ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन. जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा था दोनों ऑब्जेक्ट के कि जब व्हेन दे कम इन द कॉन्टैक्ट, इट मीन्स द फोर्स इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन. So this force is said to be as, this force of friction at this stage is said to be as kinetic friction. Kinetic friction is the opposing force that comes into play when one object is actually moving over the surface of another object. ये कब हम लोग kinetic friction का stage कब आता है, when one object is actually moving over the another object. Okay, so this kinetic friction has been divided into two types, sliding friction and rolling friction. So first one, sliding friction, the opposing force that comes into play when one object is actually sliding over the another object is called sliding friction. अब ये friction को हम लोग sliding friction कब बोलते हैं, this opposing force comes into play when one object is actually sliding over the surface of another object. वो actually slide कर रहा है, this is called as sliding friction. When one object slides over the another, the opposing force is said to be as sliding friction. For example, when a log of wood is moved on a flat surface, it slides. In this case, the opposing force is called as sliding friction. Second one, rolling friction, the opposing force that comes into play, that opposing force, the force of friction, when one object is actually rolling over the surface of the another object. Slide करना and roll करना is different thing. Slide करना मतलब simply वो move कर रहा है, roll करना मतलब वो घूम घूम के जा रहा है. So sliding friction slide हो रहा है, roll करना मतलब वो roll घूम घूम के जा रहा है. When a wheel or a log of wood rolls over a flat surface, the opposing force is called as rolling friction. ठीक है, sliding और rolling में यही difference है. Okay, so this is sliding friction and rolling friction. Now page 10 student, page number 172. 172 factors affecting friction is given in this chapter. So यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि देखो, whenever possible sliding friction is replaced by the rolling friction. जहाँ भी ये possibility दिखती है, then this side sliding friction is replaced by the rolling friction. जैसे कि this is achieved by using wheels, ball bearings, rolling bearings, etc. ये कब कैसे होता है, sliding friction is replaced by rolling friction when we use wheels, ball bearings and rolling bearings. जैसे कि skates, children usually love to play skates on a roller skates. So in this you have seen in the roller skates tiny wheels were present, which helps in very small rolling friction and help in the motion fast. ठीक है, motion जो skater का होता है बहुत ज़्यादा fast होता है due to this rolling skate. Nowadays you have seen in the suitcases, in big suitcases small wheels were coming. ठीक है, wheels लगा होता है, so उसमें क्या होता है, छोटा सा बच्चा भी उसको move कर सकता है. Due to this rolling wheels, the suitcase will move freely in the flat surface. ठीक है, यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कम है एज कम्पेयर टू फोर्स, क्योंकि यहाँ पे एक हम लोग को अलग से व्हील दिया हुआ है, वी कैन अप्लाई द रोलिंग फ्रिक्शन देयर. ठीक है, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. सो व्हाट आर द फैक्टर्स आर, देयर आर टू फैक्टर्स आर गिवन विच अफेक्ट्स द रोलिंग फ्रिक्शन. फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. ठीक है, जो नेचर है सरफेस का, वेदर देयर सरफेस आर रफ, स्मूथ और वॉट एवर. ठीक है, रफ सरफेस कैन क्रिएट मोर फ्रिक्शन एंड स्मूथ सरफेस कैन क्रिएट लेस फ्रिक्शन. सेकेंड वन, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोर वेट मोर फ्रिक्शन, लेस वेट लेस फ्रिक्शन. क्लियर हो गया. नाउ another topic, this is what we are talking about, the solid friction, the friction created in the solid objects. Now frictions also created in the liquid objects. ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन जिसको बोल सकते हैं, लाइक फ्रिक्शन ड्यू टू द लिक्विड एंड द एयर. सो एयर में भी फ्रिक्शन क्रिएट होता है और लिक्विड में भी फ्रिक्शन क्रिएट होता है. लेट्स सी हाउ.
So you have just studied that all the solid surface exert friction on the solid objects moving over them. Even liquids and gases exert friction on the solid objects moving over them. So this is called as fluid friction. The liquid and the gases, however, exert lesser friction as compared to solid surface. But जो liquid friction होता है और air friction, they exert less friction as compared to solid objects. ठीक है? So you can say that the fractional force exerted by fluid is called drag. जो फ्रैक्शनल फोर्स होता है जो लिक्विड के वजह से, फ्लूइड के वजह से आता है, दिस इज सेड टू बी एज ड्रैग. व्हाट दे आर सेड एज ड्रैग. फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर. अब वाटर में कैसा फ्रिक्शन क्रिएट होता है, लेट डिस्कस दिस वन. When a person swims in water, the water opposes motion. This is because water exerts the force of friction on the swimming in a direction opposite to his motion. जैसे कि मान लो कोई स्विम कर रहा है पानी में, अब वो एक साइड से डायरेक्शन में जा रहा है और सेकेंड डायरेक्शन में वाटर है वहाँ पे, सो द वाटर क्रिएट्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू अपोज द मोशन ऑफ द स्विमर. ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन. जैसे हमको पता है कि दो ऑब्जेक्ट्स जब एक दूसरे के साथ स्लाइड करते हैं सॉलिड में, हमको पता है दे अपोज द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. सेम एज इट हो रहा है. स्विमर इज अ मूवर एंड वाटर इज अ समथिंग विच क्रिएट्स अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू ऑन द स्विमर in the opposite direction. Clear हो गया. Second, the special shape of a body or an object around which is a fluid, liquid or air can flow offering minimum friction is called streamline shape. एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन शेप होता है, बॉडी शेप होता है, जिससे क्या होता है वो फ्रिक्शन, लेस फ्रिक्शन क्रिएट करता है इन एयर एंड वाटर, विच इज़ कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन शेप. एज यू सी द मोटर बोट्स, द फिश, the ships boats are in the streamlined shape, conical shape होता है. as you see in the picture, they have streamlined body which creates less friction in air and water. Especially in water, this creates less friction in water, so they can easily move in the water. ठीक है, so this is friction due to water. Okay, all of you, page 10, 173, friction due to air. Last topic of today's class, friction due to air. Now friction is necessary, or you can say advantages and disadvantages of friction we will discuss in the next class. So friction creates due to air. The friction of air is so small that we are not able to experience its effect easily. हम जो रहते हैं, every atmosphere air is present in around us. So friction due to air is very small which we cannot feel very easily. ठीक है, वो हमको जल्दी से experience नहीं होता है. So in nature, the bodies of birds are streamlined such they experience least amount of friction in air. Air में जैसे कि birds fly in the air, so they have, their body have also streamlined body by which they can feel very small, less friction. Okay, in moving in the air. And the aeroplanes, bullet trains are also have streamlined body, so they can experience less friction while moving in the air. So this is friction, fluid friction, friction due to liquid and gases. Whether the friction due to water and friction due to air, because their body, the objects which are moving in air and water, their body are streamlined shape which create less friction while moving in air and water. So this is friction in solid, liquid and gas. In the next class we will discuss the friction is necessary evil. Okay, the advantages and disadvantages of friction, ways of reducing friction. These three topics we will discuss in the next class along with the internal question. Okay students, hope you will all understand the today's topic, and whatever problem you have related to the chapter just ask to me. Clear हो गया? कुछ भी problem होगा chapter से related, this friction chapter, just ask to me. And please students see the video link. जो भी हम लोग वीडियो गुरुकुल ऐप में डालते हैं उसको अच्छे से देखो, otherwise you people were not able to understand the chapters. ठीक है, in the live classes we will discuss all the things, but please see the video link. Okay, and see you in the next class with the new topic of the same chapter. Okay class, till then take care of yourself, and whatever problem you have just ask to me. Thank you class, thank you so much.